Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with a derivative and technical update. On technical front, Friday Nifty experiences selling pressure throughout the day and closed below its two previous trading session low. So if you see the broader markets like mid cap and small cap witness a profit booking and close in the red. On the sectorial front, only banking, oil and gas company close in the green, rest close in the red. Now we're maintaining the range bound trades within the 17,800 and 18,500 levels with a positive bias. On the Bank Nifty front, Friday Bank Nifty outperformed the Nifty and closed near the 42,500 levels. Overall, Bank Nifty closed in the positive territory on the Friday session. But if we see that Bank Nifty is still trading in a consolidation range, on the daily chart, Bank Nifty has been consolidating within a 42,000 and 42,800 levels for the past 21 trading session. So now Bank Nifty also we believe price will remain a range bound within a 42,000 and 42,800 levels. So overall, any decline should be viewed as a stock specific long trades in the market. Now on the derivative front, Nifty future witnessed a short build-up of around 3.9 percentage. Addition of 5.18 lakh shares. PCR declined from the 1.16 to 0.83 ratio, so which suggests the loss of momentum. And on the OI front, 18,100 call has seen the most OI, like addition of 12.73 million shares and 18,500 call with the 9.52 million shares. On the put option front, 17,800 put. OI is 6.545 million shares and 18,000 put with 6.32 million shares. On the Bank Nifty front, Bank Nifty witnessed the addition of a long build-up of around 1.32 percentage with the increase of 31,000 shares. PCR decreased from the 0.97 to 0.94. So major OI seen in the 42,500 put by 2.67 and 42,000 put by 2.19 million shares. While on the call option front, 42,500 call by 2.87 million shares and 43,000 call by 2.33 million shares. If you see FII front, so FII added a longs by 8,623 contracts and net positive around 5,199 contracts. So overall net long short ratio is a 53%. On the cash segment, FII sold 2,002 crore and DII bought 1,510 crore. So on the long builder front, Godrej CP, IGL and Marico for the Feb expiry looking good. Short builder were seen at Oberoi Realty, Shree Cement and M&M Finance. So that's it from I, and now I will hand over to Vishal sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Yes, sorry, good morning. To start off with our on the fundamental side, first is Reliance Industries has reported result on Friday. If you look at overall, I mean, there are two segments. One is a consumer facing segment, that is retail and telecom. Another is their oil segment. So oil segment has reported pretty strong set of number. Retail segment, which is like, telecom and the retail chain which they have, the spend has been little, the overall the outlook and probably the numbers has been little on the softer side. Now coming on the result, if you look at, the company has reported a net profit of 15,000 around 800 crore, which is marginally has beaten the estimate at a PAT level. The company, I mean, if you look at the refining margins has beaten the estimate. However, the consumer side, the discretionary spend, it has been little on the softer side. Again, on the telecom side, we have seen a higher churn and limited ARPU levers. Further, going ahead, what we understand is oil and gas segment has tailwind with a better margin, as well as given the Geo is spending on the capex, which is the 5G side. So probably we could see incremental level of the data usage, and plus another thing to watch is tariff hike, because that has been, the market has been little worried that what we could get a sense from even from Bharti Airtel, the weakness that we are seeing. Now the same thing pans out, which is tariff hike, then it will be bode well further well for Reliance Industries. Next is on ICICI Bank. ICICI Bank has reported numbers overall, pretty good set of results they have reported, and
The credit growth has been upward of 20 odd percent, and importantly, GNPA for the company, it has around 3.1%, which was around 3.2% on a quarter-on-quarter basis. The margins, again, they have seen an improvement. Now we released our note where we are maintaining a buy rating on the stock, and now we target the price for the stock is 1,260, and this ICICI Bank remain our top pick in the banking space. Next is on Ultratech. So Ultratech has reported numbers in line with what the street was estimating. And importantly, what we understand is the volume growth has been pretty strong for the company. The margins improvement has been there, which everyone was expecting, but margin improvement is more of from the volume side, which is like an operating leverage benefit has been there. But if you look at price hike, again, the fuel cost, that these two benefits, they are not yet seen in the quarter 3. So what we understand is quarter 4, we could further see an improvement in terms of the margin. Now, company will be hosting a con calls. We'll update more. But having said that, we retain our buy rating on the stock, and we'll update more on the revised target price. Budget is around the corner, so building material company, including the likes of cement, which is Ultratech, should be a beneficiary of it. So thematic play again there is on Ultratech cement. Next is on IT space, which is LTI. So LTI has reported numbers where the note that we have published, we have upgraded the stock to from hold to a buy, and our revised target price is 5,000. Now, if you look at in terms of results, so the company has reported a revenue growth of which is 1.09% on quarter-quarter basis, and we believe that as a merger-related issues are ironed out, the company will report an improving revenue and profit. In terms of synergies, the company is expected to benefit from the cross-sell and upsells opportunity. As I just highlighted, we have upgraded the stock to a buy, and target price is 5,000 on LTI. Next is on JSW Steel, weak set of numbers the company has reported. If you look at consolidated sales, they stood at around 5.6%, which is though it is up by higher by 14%. And but having said that, on the mining and royalty expenses, that has hit the company, and that has led to a weak set of number. And the note that we have published, we have cut our EBITDA estimate to factor the weakness in the quarter 3 number by 27%. EBITDA cut has been there, and now we are revised target prices 751. We are retaining a hold rating on the stock on GSW Steel. Next is on a couple of other news, a couple of other results which came out to start up with the Kotak Mahindra Bank. So pretty strong set of numbers the company reported. Overall, I think what we are seeing is in a banking space, the results has been pretty strong. Not only Kotak, even the previously HDFC, ICICI, so all of them, they have reported pretty strong set of numbers. So coming back on Kotak, so Kotak net profit growth has been 31% on Y&Y basis. Again, net interest income has been pretty strong at around 30%. And on the NPA front, the GNPA, which is the gross non-performing asset, they have declined for the stock to around 1.9, which was around 2.1%. So overall, good set of results from Kotak Mahindra Bank. Next is on JSW Energy. So JSW Energy reported number which is a little on the weaker side. Revenue was down by around 5.8%. On a quarter basis, and vis-a-vis consensus, the numbers are lower by roughly 7 to 8% on the revenue front. Even in the PAT level, sorry. PAT level, again, if you look at the PAT as company has reported a PAT of around 186 crore, which was a consensus estimator of 300. So roughly, the numbers are lower vis-a-vis even the consensus at PAT level more than 30%. So we could see, the negative set of reaction on the JSW Energy. Next, again, another stock which has been in the limelight around a couple of months back. When there was change of CEO, which was led by RBI-led initiative, which is RBL Bank. But if you look at numbers point of view, the net profit is up by 34% for the company, and NII is again further up. GNPA, if you look at, this was again 3.6%, which was 3.8%. So all in all, I think banking counters, whether you name it frontline banks, or maybe the probably second or third tier banks, all of them, they have reported a pretty strong set of number. Next is on Lemon Tree. So Lemon Tree, where we have a buy rating.
and a target price of 104. So the company has opened a property in Kumbhalgarh, Rajasthan, which is basically the company is which will be franchised by Lemon Tree Hotel. Is expected to open on 23rd in 2023 in December. The signed which they are the agreement which has been signed. It is for the 59 well appointed room, which will have a restaurant and a bar. Hotel wise, location wise, again, I mean, like, it is not that far off. From the city, because again, like, which is, like, on the center side of the city, which is located 90 kilometers from the airport. And if you look at from the railway station, is 80 odd kilometer. So I mean, we continue to retain our positive view on Lemon Tree with the target price of 104. Last thing from my side is on GMR. So GMR, we did a site visit, and further, like, we interacted with the company. GMR as a stock, if you look at, I mean, is a pure play on India's airport business. And I mean, though in terms of business performance, it has been on the weaker side of the company, because the COVID has hit the company pretty badly. And but having said that, company is guiding, like, going ahead with the expansion of Delhi and Hyderabad. And overall, I mean, if you look at with the Goa commissioning, the things should improve. But I think currently we are not able to yet form the view on GMR airport, because I mean, like, in terms of play, it is a play on the overall the pickup in the economic activity. But having said that, GMR in terms of performance, it has been little weak in terms of reporting numbers. So we'll update more as, like, the results of this company pans out, and accordingly we'll give a more update on that. Yeah, that's it from my side, and over to you, sir and team. Thank you, Vishal sir. Good morning, everyone. Further news updates is on Apollo Microsystem. The company board approved a stock split in the ratio of 10:1. That is, each share with a face value of 10 will be subdivided into 10 equity shares with the face value of ₹1. Bajaj Auto Major will launch its iconic scooter brand Chetak in Europe by early 2022 by Perrier Mobility, the parent company of KTM. Axis Bank plan to raise up to rupees 5,000 crore by way of issuance of 10-year infrastructure bond in the coming days. Gautam Adani Group plan to spin off business like hydrogen, airport, and data center between 2025 and 28 after they achieve a certain investment profile. Lastly, state-run Hindustan Petroleum Corporation hopes to operate its Vizag refinery in southern India at an expanded capacity of 15 million tons per annum from month of June month. So that's it from my end. I'll hand over to Vijay sir for further updates. Hi, good morning. A few more result updates. Saregama has reported its number. The net profit was up by 21% at rupees 52.5 crores versus 43.4 crores. Revenue was up by 23.4% at rupees 185.5 crores versus 150.3 crores year on year, which this is a positive news. Next is on Dodla dairy. The reserves was rupees at 675.4 crores versus 575.2 crores. The PAT, the consolidation PAT was at rupees 35.4 crores versus 26.9 crores year on year. So this is positive for the stock. Next is on Maruti Suzuki. The Jimmy, the new vehicle has received close to 9,000 bookings, and another one, Pronix, has received booking close to 2,500 units in initial 9 days of the launch. So this should be a positive news for the Maruti. IDFC Bank, the standalone PAT was at rupees 604 crores versus 281 crores. The gross NPA is at 2.96 versus 3.81% QOQ. This should be a positive news. The BAIL company has received an order of 300 crores for the renovation of steam turbines at Ukai Thermal Power Station, Gujarat. So a little bit of positive news. High-tech pipes, Motilal Oswal Equities Opportunity Fund has bought 3 lakh shares at rupees 937 per share. So that should be a positive news. Stride Pharma, the inspection was done by the WHO at the Pondicherry facility. The unit now the unit can produce finished dosages of the formulation products, which is a positive news for the Stride Pharma.
Union Bank has reported the numbers and 107% year-on-year growth in the third quarter. The net profit was 2,245 crores. The net interest income during the quarter has rose by 20%. That's we have positive news. Yes Bank, the net profit was at 51 crores versus 152 crores. The growth. The GNP at 2.02 crore versus 12.89 crores quarter on quarter, which is a positive news. SBI, the bank has entered into agreement to purchase 40% stake in the commercial Indo Bank LLC. Slightly neutral news. Nelco, the company net profit was down by 3.8% at rupees 5 crores versus 5.2 crores. Revenue was up by 3.1% at rupees 72.2 crores versus 72 crores. So year on year, this is a neutral. Shakti Pump, the net profit was down by 23.9% at rupees 11.2 crore versus 14.8 crores. Revenue was up by 17% at rupees 314.2 crore versus 268.6 crores year on year. So it's a neutral news. SBI Life, PAT profit after tax was rupees 304.13 crore versus 364.1 crore year on year. APE was up by 18.8% at rupees 5,430 crore versus 4,570 crores year on year. This is neutral. IEX, the net profit was down by 3.9% at rupees 77.2 crore versus 80.4 crores. Revenue was down by 14.7% at rupees 100.3 crores versus 178.5 crores year on year, neutral. Lastly, on JSW Energy, the consolidation PAT was at rupees 186.7 crore versus 320.8 crores year on year. Consolidation revenue from the operations was at rupees 2,248 crore versus 1,905 crores year on year. So this is a negative news. So these were the few updates. I'll hand over to Hitendra for the more Hindi updates. Thank you, and over to you, Hitendra. थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स नतीजे फ्राइडे को आए थे. अगर देखा जाए तो 15,792 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, जो कि 15,671 का जो प्रोजेक्शन से अच्छा था और स्ट्रीट के कंसेंसस से अच्छा था. O2C बिजनेस देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्मेंस देखा गया थर्ड क्वार्टर में और ट्रैक्शन भी अच्छा देखा जाए. रिफाइनिंग मार्जिन से बीट किए हैं, वो देखा जाए तो मार्जिन बीट किए. रेवेन्यू देखा जाए तो 2.17 लाख करोड़ था वर्सेस 2.3 लाख करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से. सेकेंडली देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक जो हमारी एक टॉपिक है, उसके अर्निंग देखे गए और नेट इंप्रूवमेंट एनआईएस में देखे गए, जो कि 34 बेसिस का जंप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि 4.65% था. और रीप्राइसिंग ऑफ लोन्स के चलते ये जंप में देखा गया. क्रेडिट ग्रोथ भी स्लाइटली डिक्लाइन हुई 23% से 20% पे, और कॉर्पोरेट ग्रोथ में भी हमें डी ग्रोथ दिखा गया, जो कि 22% से गिर के 15% पे आया गया YOY. एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी सुधार देखी गई है, जो कि ग्रॉस एनपी है वो कि 3.07 है, जो कि करंटली 3.2 था और क्वार्टर पे. और जो रीस्ट्रक्चर एसेट देखा जाए तो 0.5% पे आ गए, जो कि करंटली 0.7 पे थे. और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखेंगे 34% का जंप देखा गया YOY बेसिस पे, जो कि एनआईए का बेसिकली ड्रिवन ग्रोथ है. और इससे हम देख रहे हैं कि जो पीपीओपी जो भी वो भी 31% से ग्रो हुआ, 31% से डी ग्रो हुआ है अदर इनकम से, जो कि 1% अप था लास्ट ईयर में. हम ROA देख रहे हैं जो 2.2% का है करंटली, जो कि बेस्ट रिटर्न रेशियो है लास्ट फ्यू इयर्स में. तो करंटली इसके ऊपर हमारी बाय रेटिंग है टारगेट प्राइस 1260 के साथ और 2.5x के वैल्यू मल्टीपल के. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी मैनेजमेंट ने GMR एयरपोर्ट के साथ एक मीटिंग की थी और उनके बिजनेस अपडेट देखे गए थे, जो कि बेसिकली देखा तो GMR एक नया एयरपोर्ट मोपा में डेवलप कर रहा है और स्टार्ट कर चुका. डोमेस्टिक ऑपरेशन 23 में हो जाएंगे और इंटरनेशनल ऑपरेशन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्च 23 तक स्टार्टअप करने के लिए. देखा जाए तो 2132 एकड़ की लैंड पार्सल है और ये सर्विस करेगा गोवा और कोंकण रीजन महाराष्ट्र में. बिजनेस साइड में देखा जाए तो GMR ने हाईलाइट किया कि उनका जो एबिटा है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया कोविड के चलते हुए, बट अभी उधर उसको वो प्री कोविड लेवल्स के 90% तक पहुंच चुका है H1 FY23 में. और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि एबिटा जो है वो रिकवरी कर रहा है बेसिकली, जो इंटरेस्ट कॉस्ट के चलते और एक्सपांशन जो दिल्ली में था उसके चलते थोड़ा सा सॉफ्टनिंग होते हुए दिखा है.
और जीएमआर को लगता है कि आगे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख सकती है एबिटा में, जो कि उनको इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं हो, जो कि डेट भी सर्विस कर सकता है। सो अगले 2 से 3 साल में जीएमआर इंफ्रा को लगता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो फ्री कैश फ्लो इक्विटी होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और इम्प्रूवमेंट में जैसे हम देख रहे हैं पैसेंजर फुटफॉल भी बढ़ रहा है, कार्गो और रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन भी हो रहा है। इस स्ट्रेटेजी के चलते कंसोलिडेटेड डेट जो है इनका जो कि 213 बिलियन के आसपास का है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नतीजा है। एबिटा देखा जाए तो इनलाइन था हमारे कंसेंसस एस्टिमेट के, बट लोअर था 14% से। और इसके साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया वो भी स्ट्रॉन्ग था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का 83% था अगेंस्ट 75%। और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। इसमें बेसिकली फ्यूल कॉस्ट है वो स्लाइटली हायर था, तो मतलब जो कि लोग जो कि इनकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो हायर थे, और जो लो कुकिंग पॉइंट के प्राइसेस अभी तक प्राइसिंग नहीं किए गए हैं। और वॉल्यूम में देखा जाए तो वॉल्यूम भी हेल्थी थे 30% ईयर ऑन ईयर पे, और ब्लेंडेड रियलाइजेशन देखा जाए तो वो 0.2% डाउन थे। एबिटा पॉइंट देखा जाए तो 904 पर टन था, करंटली 808 से बढ़ के। नेट डेट भी कम हुआ है 84 बिलियन से रिड्यूस होकर 77 बिलियन पे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक नई कैपेसिटी कमीशन की है 5.5 एमटीपीए की और 1.9 एमटीपीए के राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में, और 1.8 की जो कि धुले महाराष्ट्र में है। एक ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है धर मध्य प्रदेश में जो कि 1.8 एमटीपीए का है। सो करेंटली हमारे इसके बिल बाय रेटिंग है, बाय रेटिंग है। नेक्स्ट एलटीआईएम ने अर्निंग्स रिपोर्ट किया है 1.9% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ देखा गया रेवेन्यूज में, डिस्पाइट फॉरलो के चलते और मर्जर रिलेटेड थोड़े जो चैलेंजेस के थे। और कंपनी ने ये भी कहा है कि जो इनकी अर्निंग्स है वो इम्प्रूव होगी, और धीरे धीरे जो सिनर्जीज है वो क्रॉस सेल और अपसेल के चलते वो अपॉर्चुनिटीज और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। नॉन ग्रुप के जरिए भी थोड़ी सी सिनर्जीज बढ़ाएंगे। फर्दर कंपनी ने ये भी कहा कि वो एम कर रहे US $1 बिलियन अगले 5 साल में सिनर्जी बेनिफिट्स के चलते आ सकता है। और अनदर 200 बेसिस पॉइंट्स का जो कि करेंटली 17.5% का है वो 19.5% की ग्रोथ वो बता रहे हैं। मार्जिन भी देखा जाए तो क्या 15% के आसपास का था, इसमें देखा जाए तो 190 पिप्स का जंप देखा जो कि 18% का। जब करंटली हमने इसके स्टॉक को अपग्रेड कर दिया, जो करंटली होल्ड था उसे बायफिक कर दिया है 25x के वैल्यूएशन के साथ, जो कि 5000 के प्राइस टारगेट के साथ। जेएसडब्ल्यू स्टील के भी नतीजे देखे जाए तो हमारे एक्सपेक्टेशंस के भी नीचे थे, हायर देन एक्सपेक्टेड। बेसिकली जो सेल्स देखा जाए तो 5.63 मिलियन टन का था, जो कि हायर था 41% ईयर ऑन ईयर। बट एबिटा देखा जाए तो उसमें जम गया 159% का फॉल देखा गया, क्योंकि कोकिंग कोल प्राइसेस के चलते। नेट प्रॉफिट देखा गया तो 4.7 बिलियन का था, जो कि एडजस्टेड नेट लॉस था 3 बिलियन का। और नेट डेट देखा जाए तो बढ़ा है 37 बिलियन से, जो कि करंटली 694 बिलियन पे है। ट्रेंड ने कहा है कि वो एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, मास एमईटी, जो कि सेटअप करेंगे इंडिया में, जॉइंटली डेवलप करेंगे बिजनेस इंटीग्रेट वेयर और अदर एपल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। आरबीएल बैंक के भी नतीजे देखे गए, नेट प्रॉफिट देखा गया 34% का जंप देखा गया 209 करोड़ पे। एनआईए जंप देखा गया 14% का 1148 करोड़ का। ग्रॉस एनपीए में भी थोड़ी सी फॉल देखी गई, जो कि 3.8 से गिर के 3.61 हो गया, और नेट एनपीए 1.18 पे स्टोर है, जो कि 1.26 हो गया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के भी नतीजे के रेवेन्यू में हमें गिरावट दिखी, जो कि 6% की थी, तो 2248 करोड़ की। एबिटा भी डाउन था 30% के आसपास, जो कि 624 करोड़ का था। मार्जिन में भी फॉल देखा गया, जो कि 28% के आसपास था, तो जो करेंटली 37 था। और नेट प्रॉफिट भी डाउन 60% से हुआ, जो कि 186 करोड़ का था। कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे देखे गए, नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 31% का जंप था, जो कि 2791 करोड़ का था। नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए 30% का जंप था, जो कि 5654 करोड़ का है। ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो 1.9% का है, और नेट एनपीए 0.43% का है। अभी हम देखेंगे लेमेंट्री होटल्स ने एक नया रिसोर्ट ओपन किया, जो कि फ्रेंचाइजी बेस में, जो कि कुंभलगढ़ एरिया राजस्थान का है। ये प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज रहेगी लेमेंट्री से, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 से ओपन होने के लिए। और प्रॉपर्टी में 59 वेल रूम्स है, और एक रेस्टोरेंट, एक बार है, मीटिंग रूम्स और स्विमिंग पूल भी है। ये 90 किलोमीटर अवे है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कि उदयपुर के पास है, और 80 किलोमीटर फालना रेलवे स्टेशन से है। करेंटली हमारी इसके बाय रेटिंग है 104 के प्राइस टारगेट के साथ। और थोड़ी हम नतीजे देखते हैं। एसबीआई लाइफ के नतीजे देखे, जो कि 304 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 364 करोड़ का हमने दिखाया था। एवरेज एपी देखा जाए तो 18.8% था, जो कि 5430 करोड़ था वर्सेस 4570 करोड़।
IEX का भी नेट प्रॉफिट डाउन देखा गया 4%, जो कि 77 करोड़ था, जो कि 80 करोड़ का। रेवेन्यू भी डाउन देखा गया 15%, जो कि 100 करोड़ के आसपास का है। पेट्रोनेट LNG की भी नतीजे दिखे जो कि 1180 करोड़ का है थर्ड क्वार्टर के, जो कि 750 करोड़ था। और एबिटा देखा जाए तो 1675 करोड़ है, जो कि 1001 करोड़ का है। सारेगामा का भी नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 21% से जम हुआ, जो कि 52.5 करोड़ का है, जो कि 43.4 करोड़ के आसपास का है। और रेवेन्यू देखा जाए तो 23% के आसपास है, जो कि 186 करोड़ का है। So that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning call. You may now disconnect.